नमस्कार ब्रजविजन में हम नई चर्चा के साथ आपके पास हाजिर हैं। इस बार हम चर्चा करेंगे फोटोग्राफी की। आपने नॉर्मल फोटोग्राफर्स को भी देखा होगा, लेकिन आज हम जो मिलेंगे जो एक्सीलेंट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और जो तारों, सितारों और चंद्रमा की भी फोटो खींचते हैं और शायद सूर्य की भी फोटो खींची होगी। तो आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप फोटोग्राफर हैं, आपने ये पैशन डेवलप किया है और आपने एक अलग तरीके का आयाम फोटोग्राफी में कायम किया है जो आपका बहुत रीसेंट है। आपने चीता लेपर्ड चीता नहीं, ओके लेपर्ड इंडिया में चीता होता नहीं है। ओके रिसेंटली अभी 2-3 चीता आए हैं, हाँ, उनमें भी प्रॉब्लम हो गई। तो आपने लेपर्ड की जो फोटोग्राफी की, वो इंस्पिरेशन या वो चीज आपके पास कैसे आई? बिकॉज बहुत डेंजरस है। देखिए, डेंजर तो हर जगह है, सड़क पे भी है, बट if you are mature enough and if you are well planned and if you are sensible, then you can face any danger. तो मैं फोटोग्राफी 2012 में 2012 में मैंने फोटोग्राफी का फर्स्ट टाइम कैमरा अपने हाथ में लिया था। तब से मैंने फोटोग्राफी भी करना चाहिए। एंड परंतु मैं अभी रैलीज फिर भी कर रहा था, और जब ये कोविड आ गया तो रैलीज बंद हो गई एंड आई क्रॉस्ड 70। तो अब जब 70 क्रॉस कर गए और रैलीज भी बंद हो गई हैं, सो आई सेड यार, what should I do next besides my doing other things which you know? So I said let me go into some serious photography. So that is how I started some very serious photography, astrophotography and wildlife photography. I will not talk about astrophotography today. Yeah, sure. But on wildlife I can speak as much as you want. Yeah, so wildlife photography I wanted to do. So मैंने सोचा wildlife करेंगे. So I went to ये जो wildlife sanctuaries होती हैं. But I'll be honest with you, मुझे वो वहाँ पर adventure नहीं मिला, वो challenge नहीं मिला. Because you are restricted. You are put into a jeep and you have the time. You can enter the sanctuary. And they have a designated route. उसी रूट के ऊपर आप चल सकते हैं, आप रूट से हट नहीं सकते हैं, और यदि आपको वाइल्ड लाइफ दिख गई, वेरी फॉर्चुनेट, आप उसकी फोटो खींच लीजिएगा. सो फॉर मी दैट्स नॉट एडवेंचर, दैट्स नॉट अ चैलेंज, दैट इज अ टूरिज्म. बेसिकली आप गए अपने टूरिज्म पर. हमारा माइंड शिकारी टाइप का है, हमारा माइंड इज फुल ऑफ द हंटिंग एटीट्यूड. सो I found out on the net that there's one place in India which is known as Bera, B-E-R-A, in Rajasthan. And next to Bera there's another place known as Javai. So Javai Dam है वहाँ पर. तो ये जो area है, this is open territory. And it is a part of the Aravalli Hills. तो वहाँ पर जो terrain है, that is very, very, very compatible for the survival of leopards. So they are huge mountains, rocks, caves, forest. So वहाँ पर leopards हैं, and that's not a wildlife sanctuary. So you are free to go. There's no entry fee. There's nothing. You have to have your own jeep. You have to have your own whatever you want. So that's a challenge, and it's very difficult to sight leopards in that area. It's a challenge. Really, you have to run around, you have to drive around, you have to feed, and then luckily you might see one. So that I found very interesting. So I said, यहाँ तो challenge है. So that is why I started, because वहाँ पर I start my day at 3 o'clock in the morning. Usually I'm already used to getting up 3:30. तो 3 बजे उठ के हम 4 बजे going to the jungles, into rocks, and it's a very well planned and we work and all. So incidentally, I started taking photographs, and gradually I said, how about writing a book? Yes. So now I'm in the process of writing a book on the leopards of Bahia.
which I hope to finish by next year. आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट है कॉमन सिटीजन के लिए कॉमन Yes, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम तो सिर्फ फोटोग्राफ में ही देखते हैं या किसी फिल्म में देखते हैं कि फोटोग्राफर बैठा है ले रहा है। तो आप थोड़ा इस कैमरे के बारे में भी इसके बारे में जितना कम पूछे उतना अच्छा ही है। I know it is very heavy on the pocket, that is for sure. But if you want to do serious wildlife photography, challenging photography, which you have to finally convert into a book, you need fantastic photographs. You need very high quality photographs, and you can't do that without proper equipment. So gradually, slowly and gradually, I had to, from nothing, graduate to this level. Not only in equipment, but also in my school of thought and my way I take photographs and how I take photographs. So this is the reason why this equipment is an essential part for me. But otherwise, I don't think so. You require this. जब आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं जी, तो वो आपके दिमाग में वो थॉट कैसे आता है कि ये पोजीशन पे अगर मैं फोटोग्राफ लूँगा तो बहुत अच्छी आएगी और ये ऐसे नहीं लूँगा। ये आपको अच्छी बात बता दूं कि जिस तरह की मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ में, देयर इज नो चांस दैट यू कैन प्लान योरसेल्फ और यू कैन प्लान योर शॉट, बिकॉज वाइल्ड लाइफ में कभी पता ही नहीं है कि वो आपके सामने कब आ जाएगा, व्हेन इट विल एक्सपोज हिमसेल्फ टू यू, where it will expose himself to you, what time it will expose, depending upon the sun or the lights or everything. So it's a big challenge. So very short span of time it gives you to get into position and take a photograph. So it's a real challenge that you have to be so quick, not only with your equipment but also to get into position so that you get a good shot, because it depends. Photography is all depending upon light. So you need to really know कि लाइट किस समय ठीक है। You see, incidentally, the leopards are only sighted early mornings or late evenings. Okay. So daytime में तो बहुत rarely, only in winters sometimes you can sight a leopard. But otherwise वो सुबह जैसे सूरज उठता है वो बाहर आ जाते हैं या तो रॉक्स पे बैठ जाते हैं सनबेदिंग के लिए, फिर शाम को उनको निकलना ही पड़ता है फॉर द हंट। तो उस टाइम आप देख सकते हैं। तो दिन में तो there is no chance of photography. From 10 o'clock till 4 o'clock, the chances of sighting a leopard and photographing a leopard is minimum. आपने कभी टाइगर या लायन leopards नहीं, इसके लिए भी आपने टाइगर नहीं, अभी मैंने टाइगर को शुरू में मैंने आपसे कहा ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाता था तो वहाँ टाइगर्स हैं, जैसे पन्ना वगैरह में मैं गया हूँ, बट टाइगर्स तो सभी फोटोग्राफी करते हैं टाइगर्स की, बट लेपर्ड्स की बहुत कम लोग हैं। बट आई एम टेकिंग इट वन स्टेप फर्दर एंड रियली जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो साथ में आप उनकी जो लाइफस्टाइल है लेपर्ड्स की उसका भी आपको नॉलेज पता चलता है? मुझे काफ़ी नॉलेज है। कैसा आप सवाल कर रहे हैं, जैसे कि ये मुझे मालूम है, जैसे आप पहचान लेते हैं कि आप उस एरिया में गए तो आप लेपर्ड को पहचान लेते हैं कि ये लेपर्ड की मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तब मैंने फोटोग्राफी की। और हाँ, तो अब चूंकि मैं वहाँ इतना ऑफन जाता हूँ, इतना रेगुलर पीरियड्स पे जाता हूँ, मैं करीब कम से कम सब लेपर्ड्स को पहचानता हूँ। तो ये वो है, उनके नाम भी हैं। अच्छा, नाम भी आपने नाम दिए या जो आपके लोगों ने नाम दिए? वहाँ बेरा में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ एक कम्युनिटी है जी, जिसका नाम है रबाड़ी। रबाड़ी कम्युनिटी है। ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि वहाँ पर किसी भी लेपर्ड ने आज तक किसी भी ह्यूमन को अटैक नहीं किया। अटैक का मतलब उनको हार्म नहीं किया। वो अटैक जरूर करते हैं, फेक चार्ज करते हैं, पर वो किसी को भी हार्म नहीं किया। वो बड़ा ही अजीब सा रिलेशनशिप है बिटवीन द रबारीज एंड द लेपर्ड्स, एंड दे लिव सो पीसफुली, दे कोएग्जिस्ट सो हैप्पीली। परंतु अगर आप उत्तराखंड में चले जाएं, कहीं चले, वहाँ तो अटैक ही कर रहे हैं और मार रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, रोज पेपरों में पढ़ते हैं। परंतु वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ जितने भी रबारीज हैं वो बकरियाँ चराते हैं या अपने गाय चराते हैं, और ये लेपर्ड्स उन्हीं की बकरियों को खा जाते हैं, उन्हीं के कुत्ते खा जाते हैं, उन्हीं की गाय को खा जाते हैं। And the rabaris don't object to that.
दे फील कि ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप. वो भी जानते हैं कि ये इनको छेड़ने से कोई फायदा नहीं. वो अपना खाना पीना उनका बना हुआ उन्हीं की बकरियों से, उन्हीं की कुत्तों से, उन्हीं की गायों से, और उनके भी जो भी गाय बकरी जिनकी मृत्यु हो जाती है वो एक अच्छी जगह पे रख देते हैं, वो आके खा भी देते हैं. सो आई थिंक देयर इज अ वंडरफुल रिलेशनशिप बिटवीन द लेपर्ड्स एंड द रबारी कम्युनिटी. सो यहाँ वहाँ ये थोड़ा सा डर कम है, परंतु अगर आप ज़्यादा उसको उसके टेरिटरी पे जाके ज़्यादा खड़े रहें, ज़्यादा नज़दीक जाएं, तो वो चार्ज करते हैं. आई वाज चार्ज लास्ट मंथ. सो चलता है. पर आप फोटोग्राफ ले पाए थे जब वो चार्ज कर रहा था, या ले ली थी आपने? आपने बर्ड्स की भी बहुत फोटोग्राफी की. बर्ड्स के लिए बिकॉज बर्ड फोटोग्राफी का मेरा ज़्यादा शौक नहीं है, बट दैट आई डू ओनली टू लर्न, टू प्रैक्टिस. तो भरतपुर वेरी फॉर्चुनेट कि भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नज़दीक है, या टीठम पे मैं जाके प्रैक्टिस करता हूँ, मोस्टली फॉर प्रैक्टिस. आप एक गियर पहने हुए, इज इट अ फोटोग्राफर्स गियर या? There are many, yes, I have to, because I have to have many pockets. कभी किसी का लेंस कवर रखना पड़ता है, कभी वो टिश्यू क्लियरिंग की चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और ये ज़रूरी है. कभी मास्क बनाना पड़ता है, या कभी मट्टी पड़ जाती है, उससे झाड़ना, हाथ साफ बनाना पड़ता है. So you need lots of things. It's not. You carry some food also? Yeah, we carry some food and tea and everything. Yes. Sure. So you get time when you're doing this? No time. Because you have. It's only when we finish. Then we stop and we are tired and we exhausted, so we stop in a shade. कहीं का अच्छी जगह रुक जाते हैं और वहाँ अपना थक जाते हैं, और आराम से चाय सैंडविच खा लेते हैं. And the team which supports you? Yes, I have a team of a wonderful team. And उनका नाम, एक का नाम इरफान है, दूसरे का नाम मोहन है. मिस्टर मोहन को मैं बकरी बोलता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल बकरी की आवाज़ निकालता है, ऐसी आवाज़ निकालता है कि आने लायक नहीं. तो लेपर्ड बाहर आ जाए? नहीं, वो हम नहीं करते, because that is not be honest. So we don't do that, because that is not correct. So मज़ा तभी है कि आप real challenge. नहीं, आप जब फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो जो आपकी टीम होती है वो what they do? They are both. एक तो जो जीप चलाता है, he is an excellent driver. He is an off-roader. प्लस वो इतनी जहाँ पे सड़क नहीं होते वहाँ गाड़ी भी चला रहा होता है और स्पॉटिंग भी कर रहा होता है. So good at it. और जो दूसरा मोहन है वो स्पॉटिंग का मास्टर है, वो स्पॉट करता रहता है, और मैं तैयार रहता हूँ कैमरा लेके. एंड देन वी ट्रैक, पैरों के निशान से कहाँ है ट्रैक करना पड़ता है. मतलब एक लर्निंग ये है कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जा रहे हैं तो यू ऑट टू हैव अ गुड टीम. आई थिंक सो, यस, यू नीड टू हैव अ गुड टीम, because they know the terrain. They know the terrain, they belong to that part and you can't get lost. नहीं तो वहाँ जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर एक एरिया है, it's a huge, nearly 70-80 किलोमीटर का रेडियस में है. वहाँ एक एरिया है, उसको मैंने नाम दिया है भूल भुलैया. अगर आप वहाँ चले जाएं, you can't come out of it. You can't until unless the experienced person from that area, even the existing guides जो वहाँ पर हैं, वो भी खो जाते हैं इन भूल भुलैया. एक भूल भुलैया से मेरे को एक याद आया, आपने एक भूतों के महल पे भी फोटोग्राफी की. हाँ, भूतों के महलों में कहना तो नहीं चाहिए आपको, करिए मैंने कुलदारा में भी करी है, एक बार नहीं 3 बार. What was that experience as a photographer? As a photographer क्या है कि मेरे को तो वहाँ भूत का कोई महसूस नहीं हुआ, बट मेरे संग आगरा के तो मेरे फ्रेंड्स गए थे, मिस्टर वेदपाल धर एंड मिस्टर पीयूष सचदेवा. इन दोनों को मैं लेके गया था, और ये मैं कुलदारा की बात कर रहा हूँ जो राजस्थान में है, जैसलमेर से आगे. तो वहाँ रात को वहाँ बड़ी मुश्किल से, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड. फिर भी वहाँ के हम लोगों ने इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए आपको अलाउ कर देते. तो हम लोग वहाँ गए और रात को हमने वहाँ फोटोग्राफी करी, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करी मैंने.
और मिस्टर पीयूष को मैंने बोला था कि थोड़ी सी एक वहाँ जाके टॉर्च जला दो ऐसे कर, तो वो वहाँ थोड़ा अंदर गए थे. सो जब हम लौट के वापस जा रहे थे, देन ऑन द वे ही सेड कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ. He felt the आपके पास इतने हाई स्पीड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, जी. जब आप क्लिक करते हैं तो ये सुपरनैचुरल कभी नहीं, मेरी किसी भी फोटो में जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैप्चर नहीं हुई. I haven't been able to capture any paranormal activity to date. No. बट काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया या है. बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया, तभी तो मैं जाता हूँ. मैं भी तो यही सोचता हूँ कि शायद मुझे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस हो जाए, पर मुझे पसंद आज तक नहीं हुआ. और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ. आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन और फोटोग्राफी का आपको बेनिफिट मिलता है? बहुत. खाली मेडिटेशन का बेनिफिट तो खैर इट्स नॉट ओनली इन फोटोग्राफी, इट्स इन योर डेली लाइफ. हमारी कार रैलीज में अगर मेडिटेशन मैं करता हूँ, माय बेनिफिट इज इन कार रैली. कार स्टार्ट होने से पहले आई कैन मेडिटेट. आई हैव कम टू अ लेवल ऑफ आई कैन मेडिटेट एनी मोमेंट. So that has out of practice. It's been many years since I've been practicing that. So it's not that I have to meditate for 2 hours or 3 hours at a stretch. But it's very important to learn how to meditate so that at a given moment, immediately you get into the meditative form, and your whole body relaxes and gives you a better perspective. And you are ready for better challenges, and you are much more effective if you are meditating. Because आप जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उसमें स्ट्रेस, extreme stress, because it's physical stress. Yeah. And mental stress because you don't know what's going to happen, and you're desperate to see something. वो desperation में you get stressed, so it's best to control yourself and stay calm and stay peaceful. Even if the wild animal or the wildlife comes in front of you, stay calm. And that you can only learn from meditation. I've had very close encounters with leopards. Very close. Just like just a pet. So now, what was the feeling? It's amazing. The guy looked at me with mutual admiration and then just walked away. And I kept looking at him, and he kept looking at me. I took his shots, and I never felt anything. I felt so happy. Otherwise, if you would have moved and all, he would have charged you. No, the one last month, which is that one charged at me, and my guide, Mr. Irfan, knew that he charged करेगी आपके ऊपर. तो हम लोग स्टेशन थे, तो मैंने उसको बोला तो होल्ड ऑन. सो ही वाज स्ट्रांग टू होल्ड बैक, but he knew when to move away. Okay. So by the time she charged, and we knew the limit, and after that we moved off. No, what is the जब आप कैमरा लेके क्लिक कर रहे हैं, आपका जो टीममेट है उसको पता है कि ये चार्ज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 1 मिनट रुको, मैं अच्छा फोटोग्राफ ले लूं. All these things happen within splits of seconds. There is no way you can say कि कुछ हो जाएगा. He knows what to do, and I know what I'm doing. But that requires a good team understanding. Yeah, it's a wonderful understanding, and this has developed since last 3 years. He's been with me now for last 3 years, and Irfan and Mr. Moore, they are with me all the time. So they must be calling, sir, बहुत दिन हो गए आप आए, something. नहीं, हमारा already planned है till next year. We are all planned. It's not just that because I'm trying to take photographs, because every photograph can't be the same. Yes. So every time I go, I need to have a different perspective, different conditions, different light, different times. So we are looking for such opportunities. So now it's becoming more and more challenging. We are looking for something different. So it's not easy for us anymore. Up to the next 7 months of my 300 hours, which I will spend in the forest, 300 hours photographing these leopards, are going to be extremely challenging, and I think I'm going to enjoy it. And the facilities like stay and all is available? It's very simple, and they are very expensive resorts, and they are very simple resorts. So it depends upon your budget. I generally stay in a very simple resort because I'm only there for photography.
I leave in the morning at 3:30. I'm out, and I come back by 10 in the morning. Then I'm so tired. I do my whatever I have to do, upload the photographs onto the laptop, blah blah blah. By the time I finish that, it's lunchtime. I have my lunch, then I take a nap. By the time I take a nap and get up and have my shower, it's already 3:30 in the afternoon. 4 o'clock, you have to go away, and then I come back at 10 at night. This camera, इसकी capacity कितना? How many photographs you can take? It doesn't. It is not the camera that has the capacity. It's your memory card. Memory. So the memory cards go up to 556 GB. So I have, you can see 556 GB, 260 GB. Nothing less than that. What the good thing about this camera, which I think you should know about it, that this camera, which I have on the body has, is known as Z9. Okay. Z9 Nikon. This is amazing. It takes 120 frames in 1 second. Oh. 120 frames in 1 second. But I don't use that limit because it reduces your pixels. Okay. So I use maximum 30 frames to a second. You can adjust that. Yes. You can adjust to 10, 20, 30, or you go up to. So then, once you have taken these photographs, then you select out of them. Yeah, then I go through download them onto my laptop, and then I have to go through all these photographs, which is a very tedious job and very boring at times. So then I have to select the good ones. Then I have to see whether there's some errors or shortcomings. Then I have to edit them and save them, and that's what we have to do. एक क्वेश्चन, जैसे आपने 30 फोटोग्राफ लिए, इसमें से आपको 2 पसंद आए, तो बाकी के 28 आप डिलीट erase करने, वो erase करने। अभी तो since जब तक किताब नहीं छपती, मैं हर फोटो को संभाल रहा हूँ, and keeping them in memory cards होते हैं बड़े वाले। जो आप ये किताब लिखने का जो चैलेंज आपने लिया है, वो it will be published by some publisher or? Yes, by publisher. Okay. So they have assigned you sort of a... No, they haven't assigned me. I'm doing my job and then you will give it to them. And then I give it to them, my friends, so they will do that for me, publish it for me. They'll publish it. They'll publish. It was really interesting आपसे बात करने का। हम एक और सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि आप फोटोग्राफी का बहुत एक्सपीरियंस है, जो नए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं और जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपने बहुत कुछ बताया, but there will be certain advice you would like to give. I think firstly, if you want to do serious wildlife photography, you have to sacrifice a lot, and because it requires a lot of discipline. You need to travel a lot. You have to find locations where you can really find wildlife. Now it depends how you define wildlife, whether you want to do leopards or whether you want to do elephants or whether you want to do hyenas or whether you want to do. It depends. So you have, if you are only wanting to do birds is, I don't consider birds photography as wildlife. I consider that as another genre, which is bird photography. Yeah. But wildlife means leopards, tigers, bears, wild boars, deers, the wildlife. उनके लिए you have to plan, you have to see where you want to go, and then you have to be disciplined and take up the challenge. It's going to take a lot of sacrifice. It requires a lot of money also. Well, it depends upon what you want to do. If you want to do professionally photography, absolute professional photography, then you require good equipment. But if you want to do as a hobbyist, then I think even a basic equipment can be wonderful. That will also give a good... Oh, yes. Even your mobile, I mean, let's say we are talking about photography, so let us talk about the mobile cameras. For example, the S23, the Samsung S23 is the most amazing photography mobile camera available in the market today. Because zoom is incredible. So if you have only that, तो आप बहुत अच्छी वाइल्ड फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत अच्छी, better than DSLR. आपने उससे की है? Yeah. आपके पास है? Yeah.
No, yeah, it's essential for me to have it because otherwise I need that. बहुत अच्छा चर्चा आपके साथ हो रही है और समय का कंस्ट्रेंट है. Otherwise we would have carried on and we will again come back to you Welcome. with other issue के साथ. हम चर्चा कर रहे थे श्री हरविजय भाई जी के साथ. मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ. आपके नाम में बाहिया, उसका क्या हिस्ट्री है? Before I forget. Oh, before you forget. First of all, my name is Harvijay Singh Bahia. Yes. I was born on 20th of October 1950. Okay. Okay? And on 20th of October 1950 was Dasera. Okay. So I'm born on a Dasera day. So that's why it is Harvijay. Vijay. Bhagwan ki jeet ka din. But Yes. that is why my father named me Harvijay. Okay. Bahia is my family name. Okay. Bahia is a Punjabi word, Okay. a Gurmukhi word in other words, means by. By. Alpha in numericals. Okay, in numericals. In numericals. 1, 2, 3, in- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Bai. Okay. So we belong to the Bai Pindale. We have Okay. 22 villages. Okay. It has a long history related with the Maharaja Pajala. But let us not go into that details. So, Sade Bai Pindana. Okay. So your family was Jamidar of that? Or? No, my father, we were not Jamidars. We were just farmers. Okay, you were part of that. We are, anybody belonging to those 22 villages will call themselves Bahia. Asi Bai Pindale. Oh, okay. Asi Bai Pindale. But we are part of Sidhu Barars. Okay. Sidhu Barar, Asi Bahia, Asi Bai Pindale. So that is why my name is Harvijay Singh Bahia, Bai Pindale. Okay. Does this name continue down the line or? Yeah, some people call Bahia. Your son? They are Bahias. Your son? Yeah, sure. Yes. His name is Harshev Bahia. Bahia. Okay. Because that's a very unique name, at least Yes. for this part of the. Many people think that's a Spanish name because the Bahia means bay, and you have this name very popular in Spain, Yes. and also in Argentina, and also in North of America. There is Bahia, very famous place, Bahia. आज एक नई जानकारी और मिली हमको. हम धन्यवाद करते हैं श्री हरविजय सिंह बाहिया साहब को, और आगे हम फिर उनसे चर्चा करेंगे.